ಅದ್ಧೂರಿಯ ಒಣಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ಅವರೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಡರಾಮ್ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕ್ಕಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. बिल्कुल आज की दिन की मैच है ये, मैच ऑफ द डे, मैच ऑफ द डे कह सकते हैं. केएफसी कृष्णापुरा बनाम केएफसी कोडिकल. लेफ्टी नवाज खड़े हैं स्ट्राइकर एंड पर, उनके साथ ही साथ अल्ताफ वालपाड़ी और गेंदबाजी पर दक्षित. पहली गेंद डॉटेड डिलीवरी, अपनी अगली गेंद लेकर तैयार रहा, दाहिने हाथ अराउंड द विकेट. बल्लेबाज नवाज के लिए बाईं हाथ की खिलाड़ी है, खतरनाक खिलाड़ी है अंडरआर्म की. इस बीच उछाल करके ले गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा पर एक टप्पा करने के बाद गेंद सीमा रेखा पार करते हुए 6 रनों के लिए पहली बाउंड्री यहां पर आ चुके हैं. नवाज लेफ्टी की बल्ले से पहली बाउंड्री आ चुके हैं. लॉन्ग ऑन की दिशा पर गेंद को खेला था, खूबसूरती के साथ उछाला था गेंद. पावर प्ले का फायदा उठाते पे वहां पर दीवार से टकराया नहीं, गेंद सीमा रेखा पार कर दिया. 4 रनों के लिए बेहतरीन शुरुआत. हेलो 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 अच्छी शुरुआत केएफसी कृष्णापुरा के लिए. दोनों आरंभिक बल्लेबाज खतरनाक खिलाड़ी हैं. 2 हफ्ते पहले अल्ताफ वालपाड़ी ने 50 लगाए थे. नवाज लेफ्टी हॉट फॉर्म पर नजर आते हुए यहां पर दक्षित की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार है. इस बीच उछाल करके है गेंद सीमा रेखा पार करते हुए इधर मार गए. माइड शॉट. रात की 3 बजने वाला है और यहां पर नवाज की बल्ला बात करने शुरू किए हैं. अगर कोई सोया है तो उठकर आइए, नींद से उठकर आइए. यह है मैच ऑफ द डे. केएफसी कृष्णापुरा बनाम केएफसी कोडिकल. एक तरफ अंडरआर्म की दिग्गज, अंडरआर्म की बादशाह रियाज गोरी केएफसी कोडिकल पर, एक तरफ आजकल के खतरनाक खिलाड़ी अंडरआर्म के खतरनाक खिलाड़ी नवाज लेफ्टी बल्लेबाजी करते हुए अब तक एक बाउंड्री, एक छक्का स्क्वायर लेग की दिशा पर, एक बाउंड्री लॉन्ग ऑन की दिशा पर 10 रन आ चुके हैं. दक्षित की अगली गेंद सामना करने के लिए लेफ्टी नवाज स्ट्राइकर एंड पर. इससे बेहतर मनोरंजन आपको नहीं मिलेगा. अगर सोया है तो उठकर आइए. बेहतरीन गेंद. इस बीच इनसाइड आउट खेले गेंद को कॉर्नर सॉरी एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर, वहां पर दीवार पर टकराने के बाद गेंद को फील्ड किया गया और 2 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं बल्लेबाजियों ने. बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर. गेंद की लाइन एंड लेंथ को समझते हुए उसी दिशा पर खेलने का एक अंदाज नवाज लेफ्टी ने पिछली गेंद पर अक्रॉस द विकेट खेले थे. यहां पर ऑफ स्टंप से बाहर थे गेंद को इनसाइड आउट लॉफ्ट किया कवर्स की दिशा पर, सॉरी एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर. दक्षित अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट. इस बीच इनटू द स्क्वायर लेग रीजन, मैक्सिमम टन छक्का. नवाज द मैन. रात की 3 बजे यहां पर नवाज की भल्ला जलवा दिखाते हुए काटीपल्ला की दर्शकों को एब्सोल्युटली मनोरंजन करते हुए नवाज अपनी शरीर की सारे ताकत को लगाते हुए यहां पर गेंद को खेला था. बेहतरीन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग के साथ स्क्वायर लेग की दिशा पर 6 रनों के लिए उनकी सिग्नेचर शॉट है वो. नवाज 18 रन बना चुके हैं. देखिए स्कोर बोर्ड देखिए, 18 रन अब तक बन चुके हैं पावर प्ले की पूरी फायदा उठाते हुए. दक्षित की आखिरी गेंद सामना करने के लिए नवाज इस बीच उछाल करके ले लॉन्ग ऑन की दिशा पर, फील्डर खड़े हैं, कैच आउट के खतरा. जी हां, नवाज की बारी समाप्त.
पावर प्ले, पहली पावर प्ले की पहली ओवर की आखिरी गेंद पर 2 छक्का जड़ने के बाद नवाज यहां पर पवेलियन पर वापस लौट चुके हैं। बेहतरीन कमबैक दक्षित 18 रन खर्च किया, लेकिन एक बड़ा मछली अपनी जाल पर फंसा चुके हैं। लॉन्ग ऑन की दिशा पर लॉफ्ट किए थे गेंद को, लेकिन दूर नहीं मिला। यहां पर आसान नहीं होगा आपको लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को क्लियर करना इस मैदान पर, खास तौर पे लंबा सा बाउंड्री लाइन है लॉन्ग ऑफ का और लॉन्ग ऑन का। तो यहां पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर भी खड़े थे, फील्डर के हाथ पर सुरक्षित गए गेंद, और इसी के साथ ओवर नंबर 1 हैव बीन कंप्लीटेड। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ಖಂಡಿತ ಸಿನಾನ್ನ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರನ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟಿ ನವಾಜ್ 3.5 ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಸ್ಲೀಂ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸಿನಾನ್. डेफिनेटली राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन हमेशा गेंदबाजियों को तकलीफ देते हैं, और अब मैदान पर उतरे हैं बाएं हाथ की खिलाड़ी, एक क्लासिकल खिलाड़ी है। क्लासिकल शॉट्स इनकी तरफ से देखने को मिलेगा। पिछले हफ्ते मल्लूर के मैदान पर देखा था, लॉफ्टेड शॉट ओवर लॉन्ग ऑफ रीजन इन्होंने खेले थे, बेहतरीन तरीके से छक्का जड़ा था। तो इनकी अब स्टाइलिश गेंद यहां पर काम आएगा इनिंग्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि धमाकेदार शुरुआत मिल चुके हैं नवाज लेफ्टी के बल्ले से। तो अल्ताफ के साथ जुड़ते हुए इनको तस्लीम को यहां पर इनिंग्स बिल्ड करना पड़ेगा, पार्टनरशिप बिल्ड करना पड़ेगा। 18 रन बटोर चुके हैं। एनीथिंग अबव 45 विल बी अ गुड स्कोर इन दिस वेन्यू। पहली गेंद लॉफ्ट किया खूबसूरती के साथ, इनसाइड आउट, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर गेंद सीमा रेखा पार करते हुए छक्का। अभी अल्ताफ की बारी। अल्ताफ वालपाड़ी अपनी साथी नवाज की निर्गमन होने के बाद अल्ताफ ने शुरुआत किया। पहली गेंद पर बाउंड्री, अल्ताफ भी अब तक सामना किया। पहली गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर खेला था, इनसाइड आउट लॉफ्ट किया, रूम बनाया अपने के लिए। अब रूम बनाकर गेंद को लॉफ्ट किया था लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर। इनफैक्ट गेंद सीमा रेखा पार करते हुए 4 रनों के लिए पहली गेंद पर बाउंड्री, और ज्ञानेश की यहां पर स्वागत कर चुके हैं बाउंड्री के साथ अल्ताफ वालपाड़ी। फिर से इस बीच डीप कवर्स की दिशा पर गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री नंबर 2, लगातार दूसरी बाउंड्री आ चुके हैं अल्ताफ वालपाड़ी की बल्ले से। नवाज गया तो क्या हुआ, अल्ताफ खड़े हैं, अल्ताफ गया तो क्या हुआ, तस्लीम खड़े हैं। लाइन इज बिग, डेप्थ इन द बैटिंग इज really dangerous for KFC Kodical at this moment. 26 runs on the board for the loss of 1 wicket. ಖಂಡಿತ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನವಾಜ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಅಲ್ತಾಫ್ ರವರ ಬಾರಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರೈಟ್ ಅಮ್ಮ ಏತನ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26, 1 ಉದ್ಧರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಕೀಮ್ ಆದರೆ ರಿಯಾಜ್ ಗೋರಿ, ತಾಜುದ್ದೀನ್, ಮಂಜು, KCCR ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟದ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೈಟ್ ಕಫೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಬಲವಾದಂಥ ಹೊಡೆತ, ಉತ್ತಮ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ. ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನಾದ ವಿರುದ್ಧ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ, ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ 53 ಓಟದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 53ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಸಿನಾನ್? जी बिल्कुल, मौका तो जरूर है, लेकिन
सामने वाली टीम को भी देखना पड़ेगा। केएफसी कोडिकल क्वालिटी गेंदबाज है इनके पास। यहां पर उछाल करके ले गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा पर टन छक्का। अल्ताफ वालपाड़ी, टिपिकल अल्ताफ वालपाड़ी। यहां पर पिछले कई हफ्ते से इन्होंने पुत्तूर की अमर अकबर अंतोनी सौहार्द रोलिंग ट्रॉफी की बप्पली के प्रीमियर लीग पर 50 मारते हुए शुरुआत किए थे इस जर्नी को। वहां से यहां तक रोके नहीं कहीं। अल्ताफ वालपाड़ी पुनचा पर 7 लगातार गेंदों पर 7 लगातार छक्का जड़े थे। यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन वापसाती का प्रदर्शन यहां पर ज्ञानेश दिखाते हुए जमीन पर चिपकाते हुए गेंदबाजी किया था। आखिरी गेंद और डॉटेड डिलीवरी के साथ ओवर की समाप्त हो चुके हैं। 34 रन, 34 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड absolutely it's a good start. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ ಹುನೈನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸಂಸೀರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿನಾನ್ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಎದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ KFC ವರ್ಸಸ್ KFC, ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ KFC, ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ KFC. बिल्कुल बिल्कुल नींद आए तो भी दौड़ा होगा यहां से, क्योंकि धमाकेदार छक्कों का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। पहले नवाज लेफ्टी के बल्ले से, उसके बाद अल्ताफ वालपाड़ी के बल्ले से। तो इस बीच पहली गेंद बाईं हाथ ओवर द विकेट। ऑप्शन से काफी बाहर थे तो अंपायर ने दोनों हाथ फैलाते हुए वाइड का इशारा दिया। मंजुनाथ बाईं हाथ ओवर द विकेट। इस बीच खूबसूरती के साथ खेला गेंद को, इनसाइड आउट लॉफ्ट किया, एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा पर। इनफैक्ट कवर्स के फील्डर, डीप कवर्स के फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए तुरंत वापस किया गेंदबाज मंजुनाथ के पास। तो वहां पर एक ही रन प्राप्त करने का मौका बल्लेबाज के पास। तो स्कोर बोर्ड खोल मिलाकर 36 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। कम बैक करना है तो विकेट यहां पर हासिल करना पड़ेगा। विकेट की तलाश पे KFC कोडिकल की गेंदबाजियों ने मंजुनाथ को लाया गया। यहां पर गेंदबाजी पर थोड़ा सा वेरिएशन है इनकी गेंदबाजी पर। बाईं हाथ की गेंदबाज है, आसान नहीं होगा दाहिने हाथ की बल्लेबाज को खेलने के लिए। देखिए टिप्पा खाने के बाद गेंद टर्न लेते हुए बल्लेबाज को चकमा दिया। मंजुनाथ इज द परफेक्ट चॉइस टू बॉल एट दिस सिचुएशन। कम बैक करना है तो यहां पर डॉटेड डिलीवरी के साथ ही साथ विकेट निकालना पड़ेगा, वो भी अल्ताफ वालपाड़ी के खास तौर पर। बेहतरीन गेंद, इस बीच खूबसूरती के साथ गेंद को डकेला। यहां पर 1 रन के लिए कवर्स की दिशा पर फील्डर खड़े थे, लेकिन ओवर थ्रो की फायदा उठाते हुए एक के बाद 2 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड और एब्सेंस ऑफ माइंड कह सकते हैं, वहां पर कोई फील्डर बैकअप के लिए नहीं आया था। KFC कोडिकल के फील्डर्स उसके फायदा उठाते हुए 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं। मंजुनाथ की अगली गेंद, बेहतरीन गेंद। अब बल्लेबाज समझ चुके हैं मंजुनाथ को खेलना आसान नहीं है, तो सोच समझकर गेंद की गति के अनुसार, गेंद की लेंथ के अनुसार खेलना यहां पर बेहतर होगा। तो अल्ताफ ने आसानी से 1 रन बटोरते हुए अब स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं। ಖಂಡಿತ ಸಿನಾನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಸಾಗರ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ಬಹಳಷ್ಟು निशब्दವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ। बिल्कुल, क्योंकि ये हाई वोल्टेज मैच है। KFC कोडिकल बनाम KFC कृष्णापुरा। KFC कोडिकल के ऊपर उम्मीद इतना था, लेकिन KFC कृष्णापुरा के बल्लेबाजों ने अब शुरुआत बेहतरीन तरीके से किया है, डोमिनेट किए हैं गेंदबाजों के ऊपर। तो पिन ड्रॉप साइलेंट आता ही आता है, क्योंकि KFC कोडिकल पर बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, उनकी फैंस यहां पर उनकी प्रदर्शन देखने के लिए आए थे। तो डिसअपॉइंटेड, अब तक डिसअपॉइंटेड है उनके परफॉर्मेंस से। 39 रन्स दे चुके हैं अब तक, 1 विकेट, सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट हासिल किए, वो भी नवाज लेफ्टी का हासिल किए थे। एक अच्छी सफलता मिली थी, लेकिन कमबैक नहीं कर पाए, क्योंकि अल्ताफ वालपाड़ी ने कंप्लीटली इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया। वहां पर नवाज की जाने के बाद अल्ताफ वालपाड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाते हुए पावर प्ले का फायदा उठाया था, और 39 अब तक बन चुके हैं। अगले 3 ओवर पर कमबैक करना है तो 2-3 विकेट तुरंत निकालना पड़ेगा, और गेंदबाजी पर आए हैं हकीम।
ಖಂಡಿತ ಸಿನಾನ್ ಹಕೀಮ್ ಬೋಲವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡುಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಸಿನಾನ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂಥೋನಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಂತರ ಅಲ್ತಾಫ್ ರವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸಿನಾನ್. ये वक्त की बात है, जब वक्त हमारे साथ देते हैं ना, हम जहां बल्ला घुमाते हैं वहां पर गेंद आकर टिप्पा खाते हैं. तो यहां पर अल्ताफ के साथ यही हो रहा है, जहां पे उन्होंने बल्ला घुमाते हैं वहां पे गेंद आ रहा है. भाई हकीम छक्के के बाद बेहतरीन कमबैक, 2 लगातार डॉटेड डिलीवरीज. हकीम एक क्वालिटी गेंदबाज है, उनके पास वो क्षमता है, उनके पास वो आइडियोलॉजी है, उनके पास वो वेरिएशन है. तो यहां पर फिर से गेंद को खेला स्क्वायर लेग की दिशा पर. फील्डर खड़े हैं वहां पर सिर्फ एकमात्र रन के लिए, एकमात्र रन पर संतुष्ट बल्लेबाज. 45 ऑन द बोर्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ ओवर नंबर 4, 46 on the board in the progress of over number 4, and run rate is more than 10 for KFC Krishnapura now. ಸಿನಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ನಿಚ್ಮಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ KFC ತಂಡ ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 33ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. इस बीच उछालकर खेलना चाह रहा था, एज लगे थे वहां पर, स्क्वायर लेग के फील्डर के पास मौका था लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं दिखाया यहाँ पर. तो 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं. 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं. 4 ओवर की समाप्त के बाद 48 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. एज पर माय ओपिनियन KFC कोडिकल टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग लेना था, क्योंकि इस मैदान पर ज्यादातर मुकाबले पहली बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं. तो यहां पर KFC ने थोड़ा सा गलती की है फैसले पर. फैसले को गलत साबित करते हुए गेंदबाजों ने अब तक 48 रन दे चुके हैं. ಖಂಡಿತ ಸಿನಾನ್ 4 ರನ್ ಮುಕ್ತಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಒಂದು ಉದ್ಧರಿ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನವಾಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಂಜುನಾಥ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರಂಭದ ಓವರನ್ನ ಅಲ್ತಾಫ್ ಒಂದೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ KCC ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರುವಂತವರು ಆಟಗಾರ ಈ ಬಾರಿ KFC ಪರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಓವರಿನ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. बिल्कुल अगली गेंद फुल टॉस के रूप पर आए थे, पलट कर खेलना चाह रहा था लेकिन संपर्क नहीं कर पाए. फुल टॉस इनटू द बॉडी. अब 1 रन आ चुके हैं और स्ट्राइक रोटेट हो चुके हैं. तस्लीम एक क्वालिटी प्लेयर, 50 रन पूरी हो चुके हैं. 51 ऑन द बोर्ड एंड दे आर मूविंग ऑन टू ए बिग टोटल इन दिस टूर्नामेंट. बेहतरीन गेंद लेग स्टंप पर आए थे, गेंद पैर पर टकराई शायद. 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं. अंपायर ने लेग बाइस का इशारा नहीं, बाइस ओके, पैर पर टकराया नहीं लेकिन विकेट कीपर की गलती की वजह से यहां पर 1 रन दौड़े हैं बल्लेबाजों ने. 1 रन के साथ 52 ऑन द बोर्ड एंड इट I think it will going to a dangerous total now. Goes for a big one, into the oh my goodness, what a catch. Dakshit at mid-wicket region, one-handed blinder to depart Altaf Walpadi. Look at again in the screen, look at again in the replay at the final moment. Oh my goodness, absolutely brilliant from Dakshit. Altaf Walpadi makes his way back to the pavilion by scoring 28 individual runs. Look at again. My goodness, at the final moment he caught it in his fingers. I think not in complete hand, in fingers he caught it in the final moment. And absolutely brilliant effort from the fielder Dakshit at mid-wicket region. And now you can expect something in this scoreboard. Hisham comes in. Again a big hitter. Hisham. They have depth in their batting lineup, KFC Krishnapura. उनके पास वो डेप्थ है बैटिंग लाइनअप पर. पहले नवाज गए, उसके बाद तस्लीम आए, तो यहां पर अल्ताफ गए तो हिशाम आए. दोनों
खतरनाक है और लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन को बरकरार रखते हुए यहां पर रनआउट की खतरा। तस्लीम की बारी समाप्त हो चुकी है। मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द विकेट, बिटवीन द प्लेयर्स। हिशाम ने यहां पर उम्मीद नहीं दिखाए, इनकार किए। हिशाम की गलती है, हिशाम दौड़ना चाहिए था वहां पर, संपर्क जरूर हुए थे। आपने 6 ओवर की गेम खेल रहे हैं तो यहां पर बल्ले पर संपर्क हुए या नहीं हुए, बल्लेबाज दौड़ना ही चाहिए। आखिरी 1 ओवर बचे हैं, 53 ऑन द बोर्ड। ಅಲ್ಲೂನೇನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ನಂದಾವರ ಪರಿಸರದ ಯುವಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ। तस्लीम के निर्गमन के बाद नंबर 5 पर खेलने आए हैं अल्ताफ बसवनगुडी और एक धमाकेदार बल्लेबाज, जी हां बिल्कुल खतरनाक बल्लेबाज अल्ताफ बसवनगुडी शाम को जुड़ते हुए। 53 ऑन द बोर्ड। ऑफस्टंप से बाहर थे, गेंद को आखिरी वक्त पर कट किया, गेंद को 1 रन के लिए यहां पर पॉइंट। विकेट कीपर दौड़कर गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं। अब टारपोडोस खाना जो टोटल बनाए थे 53, उस टोटल को पार कर चुके हैं। 54 on the board now for the loss of 3 wicket, highest total of this tournament so far। अब तक की सबसे ज्यादा टोटल केएफसी कृष्णापुरा यहां पर दर्ज कर चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं। 54 for the loss of 3 wicket। अल्ताफ बसवनगुडी के लिए अगली गेंद, इस बीच रनआउट के खतरा। माय गॉडनेस, ओवर थ्रो की फायदा उठा नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पर हिसाब, जी हां ओवर थ्रो की फायदा उठाते हुए 2 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं। 22 की इशारा अंपायर की तरफ से और 22 के रूप पर 2 रन। मुझे अभी भी यह लग रहा है कि केएफसी कोडिकल की बल्लेबाजों ने नींद से बाहर आया नहीं। 56 ऑन द बोर्ड। इस बीच पलट कर खेलने का कोशिश, गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा पर खेला, 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं। एक के बाद दूसरी रन भी दौड़कर पूरी कर चुके हैं। मिस फील्डिंग फ्रॉम केएफसी कोडिकल नाउ। एवरीथिंग इज गोइंग इन द फेवर ऑफ केएफसी कृष्णापुरा एंड डिसअपॉइंटेड फेसेस इन केएफसी कोडिकल नाउ। हकीम कंटिन्यूज, आखिरी 2 गेंद बाकी। 58 ऑन द बोर्ड, गोस फॉर अ रिवर्स वन, स्विच हिट, अगेन कनेक्ट्स इट beautifully placed into the backward point region. After one, he goes for a second and appeal for the run out there at the striker's end. Umpire asks the help of third umpire now. ಖಂಡಿತ ಸಿನಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅತಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ। ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ್ 53 ರನ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿತ್ತು, ಈಗಾಗಲೇ 58 ಓಟ್ ಆಗಿದೆ। ಅಲ್ತಾಫ್ As is out and 1 run completed. 1 run completed. Second run have been one shot. Yes, done. It's completed. 1 run completed and second run have been given as a run out. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ। अब आखिरी गेंद बचे हैं और हारिस के आगमन हो चुके हैं। आखिरी गेंद पर क्या ये स्टाइलिश फिनिश कर सकते हैं हारिस? हकीम की अगली गेंद, इस बीच पलट कर खेला, गेंद को डीप कवर्स की दिशा पर गेंद चल पड़ी तो 1 के बाद दूसरी रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं आसानी से दोनों बल्लेबाजियों ने। और इसी के साथ ओवर की समाप्ता, 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 61 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 62 will be the target for KFC Kodical to win this match from 6 overs and definitely 10 runs per over, more than 10 runs per over to chase down in this ground will be a huge pressure for the batters.
ಖಂಡಿತ ಸಿನಾನ್ನ 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 61-62ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ತುದಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತುದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಬಲ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ರಿಯಾಜ್ ಗೌರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಕೀಮ್ ಸೂರಿಂಜೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೇನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಯಾವ ತುದಿಗೆ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ ಉನ್ಹೈನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್. ಅರ್ಷದ್, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ ಉನ್ಹೈನಾ. Thank you so much, Akbar Ali sir, and Sinan Pernay sir, and Majid Mangalore sir as well, keeping that hype and energy in the commentary box. It is almost 3:45. We are here in the middle of the midnight, 3:45 a.m. and still the commentators keeping that hype and energy in the commentary box. To all the people watching that match in the YouTube channel of Bedra Media as well. I request Majid Mangalore sir, please report to the commentary box. And now 62 is the target. What seems to be the highest total, I guess. This time, first ball, and he's gone. He went for that big shot, and Team KFC Krishnapura got the big breakthrough what they wanted. In the very first ball of the innings number 2, Altaf Walpadi takes that catch easily, standing in front of the commentary box, number 14. And the new batter joining alongside with Manjunath. It's the experienced man, Riaz Gori. Lots of experience and plenty of cricket behind this man. Riaz Gori walks out there in the middle. Had one of that finest campaign in Kudla Premier League as well in last week. Now Hisham KFC, after getting that big breakthrough, second time his bowling mark to Riaz Gori now. Thrashed away, what a strike that, stand and deliver from the bat of Riaz Gori. Ball rolling over to the fences for 4 runs. What a shot that. Still keeping that energy and entertaining all the spectators. In the midnight, under the floodlight. This is Riaz Gori for you. Wonderful shot that went for that one-handed stunner.
Fourth time his bowling mark now. Hisham to Manjunath this time. Bowling right arm over the wicket. No proper connection between the bat and ball. Dotted delivery from Hisham. And just 5 runs on the board for the loss of 1 wicket. Still 2 more deliveries remaining of the first over. Power play in the progress. Can Manjunath connect some big shot here while they are chasing down that huge total of 62 runs? Played straight into the hands of the fielder standing in that mid-on region. So last time his bowling mark of over number 1. Required run rate goes up to 11.03 runs per over. And still a long way to go for the batting side. Team KFC Kodical to win this match. ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಯದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕೋಲನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ತಮಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕೋಲನಿ ತಾವು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. We are still here in 3 o'clock and 49 a.m. And we can see all those spectators still sitting in the ground, staying awake, watching their home team, Krishnapura, in the action. KFC Krishnapura. What a beautiful glimpses. The support what the people of this beautiful hometown give to their team is really unmatchable. And I would like to say something about Krishnapura. Cricket is Krishnapura. Krishnapura means cricket. This is what exactly Majid Mallur sir always keep on saying about Krishnapura's cricket. And now see that bowling of Haris. Back-to-back dotted deliveries. Not giving any room for the batting side to play that shot. Riaz Gori went for the big shot. He exactly knows singles and doubles will not work while they are chasing down that huge total of 62 runs. This match is all about the boundaries. They at least require 10 plus runs in every over. This time stand and deliver into that same region where you have got the boundaries in the very first ball which you have played as well. Manjunath now. 5th time his bowling mark. Haris to Manjunath. Went for that late cut. No proper connection between the bat and ball. Dotted delivery again. 4 dotted deliveries has been bowled from this man Haris. What a bowling. Just 1 run conceded out of that 5 deliveries which have bowled. Last time his bowling mark. Haris to Manjunath. This time again. Back to back dotted deliveries. 5 dotted deliveries came from this man Haris. Just 1 run conceded. What a bowling. Brilliant display of magical bowling performance here from this man Haris. And end of the over number 2. It's 6 on the board for the loss of 1 wicket. KFC Kodical, they have got all those mighty big hitters in their batting department. Probably the game is not over until the very end of this innings. Let's hold our breath. And one more thing is that there is no advantage of any of wind as well sailing across the ground. Just a calm and radiant midnight here. And here we are in the over number 3. Riaz Gori on the strike. Hisham brought back into the attack after bowling the first over of his spell. Now he came back to bowl second over of this innings. Leg by signal coming from the umpire. 1 run have been taken. This time perhaps signed, sealed and deliver. Cleaned him up this time. What a bowling that from Hisham KFC. This is the capability of this man. This is the ability of this man Hisham. Utilizing all those experiences of all those years. He have played for KFC Krishnapura, one of the backbone of their bowling department. This man Hisham KFC Krishnapura, the top class bowler of this hometown, Hisham KFC. What a journey this has been for him. Also had one of the successful campaign in KFC Trophy as well.
just 1 month ago back in their hometown itself. Hisham. Required run rate goes up to 15 runs per over, and that literally seems to be impossible. But at the same time, nothing is impossible in cricket. Cricket is an unpredictable game. Anything can be possible in cricket. Still this time sliced away. Glorious batting that from Riaz Gori. Just converting every balls into singles and doubles, and going for that big shot once in a while, as he exactly knows how important and how vital is his presence out there in the middle to win this match for them. Similar kind of stroke from Hakim as well. Team United Suratkal won the toss, and we are awaiting the decision. As we can see, both these batters, the mighty batters Hakim and Riaz Gori, both of them out there in the middle. Until these both batters are out there in the middle, we can definitely expect some huge innings. They required that much required partnership to get onto that huge total of 62 runs. It is possible when both these batters, Hakim and Riaz, out there in the middle. It's definitely going to be possible. Their presence is important out there in the middle. Now, 3 overs completed, 18 balls and 51 runs required. Still a long way to go. Still a long way to dream for the batting side, KFC Kodical. This time direct hit. Straight away out signal given from the square leg umpire. Brilliant work from the keeper himself, the man behind the stump. What a fielding that. Acrobatic effort, coming to collect that ball himself and throwing that ball right in the middle of the stump. Brilliant fielding, as we can see all those fielders of team KFC Krishnapura kind of sleepy but still backing their self in the fielding. Second time his bowling mark now. Haris to Chetan. Chetan walks out to the middle. After that, big wicket from Hakim, KFC Kodical. He was almost there, big hope, and that man Hakim has to walk back. He did not find his touch under the floodlight. Hakim KFC and team KFC Kodical, the champions of Underarm Cricket World Cup, held at that UCG cricket ground. Went for that across barrett shot. No proper connection between the bat and ball. Top class bowling here from this man Haris as well. Bowling his second over of his spell in this innings number 2. And this time went for that defensive stroke, completely missing that ball out of the middle of the bat. Dotted delivery again. 5th time his bowling mark. Haris to Chetan. Now he went for that reverse shot, but it was country miles down the leg side. Yesterday's white signal coming from the umpire at the same time, appealing for that run out in the striker's end, and it will be going to upstraights. And still the third umpire looking that thoroughly to make that final decision of that run out in the striker's end. I think Riaz Gori, he is confident that it was not out. And the third umpire, and Irfan Bedra,
I mean, still awaiting that decision from the third umpire. And we can see still the people, still the spectators. Not out is a call from the third umpire. And Riaz Gori survives as he was already confident that it was not out. Played off the toes into that long gone region. 1 run completed. Last ball of over number 4 of Haris just conceded 2 runs. Haris just bowling dotted deliveries. And see that fantastic display of magical bowling performance here from the bowlers of KFC Krishnapura. Even when they are defending that high scoring total of 62 runs, the bowlers literally seems to be on fire. Now 12 balls and 48 runs required. Riaz Gori is still out there in the middle. Long dream for Riaz to end this match seems to be almost impossible now. The young talented bowler of Krishnapura, Siraj, brought into the attack. What a bowling that. No ball as a signal coming from the official umpire. Not a good start what the young man wanted. And can he comes back with an absolute beauty of the delivery now. He's a capable man, the young man. See that bowling action, my goodness, as I told. He now comes back with an absolute beauty of the delivery. See the pace of that delivery. The ball is travelling in a blink of an eye. The batter Riaz could not find some ways to play that shot. Thrashed away onto the onside of the field. This time suicidal attempt from Riaz, and that's gone. All the hope is back to the dugout of KFC Kodical, and KFC Krishnapura almost clinches this victory. In fact, that fielder standing in that deep long on region, while he was collecting that ball, he slipped over, because that is a very dangerous area of this ground. But somehow he managed to get that run out as well. Acrobatic effort from the fielder. Hisham KFC, the bowler. Third time his bowling mark now. Siraj to Chetan. Can Chetan go for the big shot and awake some spectators in the stands? Beautiful leg cutter, that wonderful bowling performance here from this young man Siraj Krishnapura, playing in his hometown and showcasing his skill and talent, what you have got under his shoulders. Down the leg side, dotted delivery as well. After bowling that no ball in the very first ball, Siraj, what a bowling here. Fourth time his bowling mark, fifth time his bowling mark in fact. This time again the ball is travelling in a fraction of the second, not giving any room for the batters to at least play that shot. Top class bowling here from the young man Siraj. Can he get 1 wicket? Can he get that 1 wicket? This time taking the pace of that delivery. What a bowling. Right in that last ball of his over, taking the pace of that delivery. This is brilliant from this young man. End of the over number 5. It's 17 on the board. It is 17 on the board after the completion of over number 5 for the loss of 4 wickets, and required run rate shows 45 here in the monitor, in the commentary box. Number 11, the new bowler brought into the attack,
Miles away off the offside. 1+1 run added to the scoreboard. Yes, it is. 2 runs. 2 more runs have been added to the scoreboard now. 43 runs required. Out of that remaining 6 deliveries. And I also thank Nisham Katipalla for giving me that glass of tea here in the midnight. Thank you so much, man. This time as well, miles away off the offside. White signal coming from the umpire. And they have almost won this game. He really needs to find the right line and length to end this match as soon as possible. White ball. White signal coming from the umpire. See that loud shouted from the umpire as well. Both these umpires doing a brilliant job here, standing under the floodlight, contributing to make this match much more beautiful. Satish Mudabidre sir and Pradeep Mangalore. White signal again this time as well. I'm just thinking, wondering myself, what if he bowls each and every delivery is wide here? Still a long way to think of. Not even a single delivery has been completed from this man. This time he connects that. He lofted that in form of switch hit. Magnificent strike that into the dugout number 2. See that stroke from the batter. Just picking up the pace of the delivery and executing that to the perfection of the field. 28 runs. Just 1 ball completed of that Azwin over. 11 runs conceded already. 1 ball and 11 runs conceded of this man Azwin. This is something beyond imaginations. Second time his bowling mark. Azwin. Everybody, all the spectators as well, getting confused here. What's just happening out there in the middle? This time again, he now comes back with an absolute beauty of the delivery. He's a capable bowler, but maybe he's not so energetic because this is a midnight match, as we all know. It becomes a challenging for all the players to do the batting, bowling and fielding as well, especially in this time. It's already morning, I can tell you all that. 4:05 a.m. already. This time again, what a shot that! Magnificent strike that! Glorious to watch from the bat of Akash. Second similar kind of that switch hit coming from the bat of Akash. Poetry in motion right in the very end of this innings. Last 2 deliveries remaining now. 26 runs required. White signal coming from the umpire. Satish Mudabidre sir. 5th time his bowling mark now. Right arm around the wicket. Chance of a run out, and that's probably gone. And not out is a call from the umpire. The umpire is not interested. Last time his bowling mark of innings number 2. Congratulations in advance for Team KFC Krishnapura on advancing for the next round as well. 1 ball and 26 runs required. And they have given that upstairs as well. And let's get on with the match. Not out is a call from the square leg umpire. 1 ball and 24 runs required. And brilliant strike that into the long gone region, and Hisham KFC still saves that ball from getting to that boundary line. And congratulations KFC Krishnapura. And I request Altaf Walpadi, come to the awarding point to collect your Man of the Match award for your brilliant display of magical batting. Altaf Walpadi, the man of big stages, number 14,
Altaf Walpadi, please come to the awarding point as soon as possible to collect your Man of the Match award.